खेलो, जब भी आपको टाइम मिला आओ, गेम खेलो, स्ट्रेस बस्टर होता है। मुझे आती नहीं है कोई गेम, बट मैं आज पहले। Hi, so here we have Dimitri. He's a professor of CLT, Chemical Lab Technician, and other programs. And this is a lab specifically for CLT students and other programs like technician programs. So he will go over some of the labs. The students get hands-on experience with the equipment and the instruments. Hands-on, where they use it, practical experience, and that's very important. Yeah, I know. And they work independently, build confidence. Yeah. That's very important. And even here we have grades on lab, right? There are lab grades. Oh, absolutely, absolutely graded. It comprises of a major part in your overall grades. The lab component of your course is very, very high weighting. बहुत कुछ रिकॉर्ड किया, बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। आप मानो या ना मानो, यहाँ पे कनाडा में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कोई लैब। I have Kevin, who is a lab. Are you lab tech right here? No, I'm professor. He's a professor, and he's a pharmaceutical science professor, and this is the pharmaceutical science lab. I'll just show you some equipments that they have here. Yep. Yeah, he will give us a tour. Yeah, in this lab we do physical testing and we do chemical testing of pharmaceutical products and raw materials. We also have an in-class lecture portion where we do more theoretical discussions on pharmaceutics in the area of pharmaceuticals. But this is the lab where we do physical chemical testing. This is called a dissolution tester, where we can drop the tablets into the vessel and the tablets will be stirred and they will dissolve. And then we can measure the amount of active ingredient released from the tablets. Okay. That's a chemical test as well as a physical test. Okay. Over here we have some other testing equipment. This is more physical testing. This is a physical tester and a physical tester where we can put the tablets inside the drum and we can rotate and look for the weight loss of the tablets. Physical testings to determine the integrity of the samples. We have different types of samples. In this case, we have ibuprofen and acetylsalicylic acid or aspirin. And here we have a disintegration test where we can put the tablets in the basket and we can disintegrate the tablets and we can determine how long it takes for these tablets to disintegrate. Because when we swallow a tablet, it goes into our stomach and possibly it needs to disintegrate in our stomach. Yeah. So we can try to get us a rough idea of how that disintegration may occur. So that's what we're doing in this lab. And we do a number of chemical testings as well to determine the chemical makeup of the tablets and the raw materials. This is not chemical makeup, this is physical. Okay. This is chemical. Yeah, and how many students do you have in a lab? Like at one there'll time? be about 22 students at one time in the lab. So yeah, I think that's the main difference here compared to India. In India, we don't have like such equipment in college, and even like if I compare an international student coming to Canada, like I'm studying, I'm a nursing student, but this is an engineer, like pharmaceutical science, and they have like so many equipments. And like 20 students, like it's enough for a lab, and each student, a professor or lab tech has a personal guidance. They can look over to the students. That's I think the main other different thing between India and Canada. Here you will get a real life experience. You have weekly labs and stuff. As far as I know, I'm a student here, so. Yes, we have weekly labs. The students get hands-on experience with the equipment and the instruments. Hands-on, where they use it, practical experience, and that's very important. Yeah, I know. And they work independently on these things, so they can learn themselves and build confidence. Yeah. That's very important. And even here we have grades on lab, right? There are lab grades. Oh, absolutely, absolutely graded. It comprises of a major part in your overall grades and stuff. The lab component of your course is very, very high weighting. Yeah, very high weighting. Yeah. Yes. Yeah. Could be 40-50% of the course. Yeah. So it's very important. Yeah. Because that's what employers want. They want students to be able to use these machines. And I know, as far as I know, Durham College has latest machines. Even like if they're upgrading, they have latest machines. And like if there are many of them, like I can see these machines, like there are like 1, 2, 3. Like we have lots of UV instrumentation. Yeah. And what you should do is you should go upstairs to the instrumentation lab. And you will see some very nice equipment and instruments, very more sophisticated. And that's what my students work up there as well. Okay. So you should go upstairs to the instrumentation lab and see they're modern instruments that you will find in every lab in the world. Oh. You will find this instrument in every lab in the world. You will find the instruments upstairs in our instrumentation lab in every lab in the world. So this is not just Canada, education, right? Not just Canada, but globally. Every lab in the world, India, Asia, North America, South America, everywhere. Okay. Thank you for your time, sir. You're welcome. It was good. You're welcome. Yeah. Okay. Instrumentation lab at Durham College. It's a modern lab.
It's very well equipped with instruments you will see all over the world. So students can get hands-on experience using instruments that all labs in the world use. Very key lab, side of the lab with 6 instruments, 6 over there. We could have 24 students in this laboratory at one time doing your experimentation. So it's very important for hands-on and for theoretical as well, to give people an opportunity. Hi, so here we have Dimitri. He's a professor of CLT, Chemical Lab Technician, and other programs. And this is a lab specifically for CLT students and other programs like technician programs. So he will go over some of the equipments that students use here. And I can ask some questions like how much students are there in the lab like at one time, because the difference from here and India is that sometimes in India there are colleges which has like so many students in lab, not a proper equipment. No professor who is like giving attention on the students. So how you run this lab? So in this one, the max capacity is 22, Okay. and we're basing it off of the fume hoods because the fume hoods are where they're going to do probably their more dangerous experiments or their more sensitive ones. Okay. So what we want is students to work in partners, Okay. and we'll have 4 students per fume hood, Okay. and then 1 additional spot. If you notice that this would actually accommodate 24, 1 additional spot just so that we can have a waste area or a chemical storage area. Okay. So in this lab, this is our basic chemistry lab. We're going to start here. We have burettes for volumetric analysis. Next door to us, we have analytical balances just for weighing our materials. We'll also do organic chemistry in here. So there are various glasswares. Oftentimes they're stored outside of the room and we just bring them in here as needed, like heating elements, Bunsen burners, and things like that. We'll also have, if you want to take a look, this is just some basic glassware that we would use on a regular basis. Yeah, it's same here. And I'll bring you over into here if you're interested. This will have, so drying oven, Okay. and here just a bit more of the volumetric glassware. Okay. So analytical balances, top loading balances, 1 auto titrator. So typically we would just have students using this for some kind of exposure. 2 auto titrating, but we don't have a bunch of them for everybody to use, Okay. like we do for other types of titrations. We do have, just as part of a LIM system, giving students experience, scanning products in, making sure that they're keeping a lab inventory, so that trying to simulate a workplace environment. Yeah. We would also have pH meters Oh. over here. Okay. There's a bunch of these. I think they're in the back room over here, but spectrophotometers, just Okay. for doing basic analysis. Some less widely used in industry, but more just learning equipment. Some really basic spectrophotometers, just so that we can Okay. kind of take a look at electrons. I use this one in chemistry too, because we start to talk about electron shells and in theory, so then it's nice to be able to see some of the electron transitions visually in terms of looking at the different colored lines. Okay. Yeah. Yeah. Here we are in the lab of biotechnologies and less chemical lab technician, like the engineering and as well as medical labs. So here there are different equipments that you can see. Like, अगर हम इंडिया में बात करें, I'll talk in my language. That's fine with you? Okay, thank you. So मैं ऐसे ही उसको परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसको ऐसा लगता है कुछ और बोल रहा है ये मेरे विषय में, तो इसलिए परमिशन लेके। तो यहाँ पे जैसे मुझे कनाडा में ये अच्छी चीज़ लगती है कि ये स्क्रीन होती है, then there is a microscope over there. तो हम यहाँ पे कोई भी सैंपल रखते हैं तो उसका डायरेक्ट इमेज we can see on the big screen. Then they have like a good amount of like microscope, like counters. They have like specific counters for different students that they can sit on. They even have like different centrifuge machines, then sinks, then like different weighing things. I can see this is a magnetic hot plate stirrer, dry bath, then there is vortex meter. But like basically you get an idea of like कि यहाँ पे कनाडा में कैसी एक लैब होती है. यहाँ पे अगर आप आते हो तो what you will get to study, because as far as I know labs are so important part here in Canada when you come as a student, because labs will give you hands-on experience. इसका परसेंटेज बहुत होता है. जैसे हमारा फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें अराउंड 50%, जैसे अभी उस प्रोफेशन ने हमें कहा. तो डिफरेंट चीज़ें इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं. मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट उन्होंने थैंकफुली मुझे परमिशन दी शूट करने के लिए. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड दैट्स इट. ये लैब है पूरी.
ओके गाइस, सो हियर वी आर एट द स्टूडेंट्स एसोसिएशन। अभी मैं क्यों इंग्लिश में बात कर रहा हूँ पता नहीं, कब का सबसे इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इंग्लिश ही आ गई। बट ये स्टूडेंट एसोसिएशन की पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पे बूस्टर जूस है, कनाडा में एक जैसे जूस की कंपनी है। यहाँ पे ई स्पोर्ट अरेना है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे सब स्टूडेंट एसोसिएशन के जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, कुछ भी सेलिब्रेशन, वो सब इसमें होता है। आपको कोई भी इश्यूज, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको मेंटल हेल्थ या तो कुछ ओके तो ये है हमारा ई स्पोर्ट अरेना कॉलेज का, जहाँ पे डिफरेंट गेम्स आप खेल सकते हो आके। फ्री में होता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे देख सकते हो बहुत ही ऐसी वाइब होती है। अभी लाइट्स स्टार्ट है बट आई थिंक कभी कब क्या करता है कि जब गेम चल रही है तो लाइट सब बंद हो जाती है ना। आपको पूरी, अगर आपको गेमिंग आती है, आपको गेमिंग का शौक है या लाइक आपको पसंद है, तो जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स का टीवी पे चलता रहता है हर वक्त, ये जैसे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे पीसी इतने सारे नहीं है बट देर आर इनफ ऑफ देम कि आप खेल सकते हो। यू कैन डेफिनेटली प्ले सम गेम्स, आप खेल सकते हो। लीजन के है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चेयर्स है। मैं आपको अभी पीसी दिखाता हूँ, चलिए। ब्रदर, दिस वन। सो दिस इज़ लाइक कॉमन एरिया टू प्ले। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा गेमिंग कीबोर्ड एंड स्टफ। यू कैन सिट हियर, हैव द माउस ऑन योर हैंड। आपको यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी सब रखना पड़ता है। अच्छा सा पीसी है, इंटेल आई थिंक कोर i9 9th जेन है। अच्छा है सब, लाइटिंग वाइटिंग, हेडफोन्स अच्छे से आपके पास गेमिंग के लिए। चेयर अच्छी है, ऐसे बैठ के यू कैन प्ले गेम हियर। खेलो, पढ़ना है नहीं हमें, खेलो जब भी आपको टाइम मिला, आओ गेम खेलो। स्ट्रेस बस्टर होता है। मुझे आती नहीं है कोई गेम, बट मैं आज पहली बार वैसे आया। मैं यहाँ पे 1 ईयर से हूँ इस कॉलेज में, बट कभी भी मैं यहाँ ई स्पोर्ट अरेना में नहीं आया था। और अगर आपको आपकी पूरी टीम है, यहाँ पे सब मैचेस होती है 2 टीम्स के बीच में, जो जैसे क्रिकेट में होती है अपनी, उसके लिए यहाँ पे ये देख सकते हो पीछे। सो ये जो है ये सब पूरी टीम के लिए है। तो यहाँ पे अगर आपकी पूरी टीम है तो एक जना यहाँ ऐसे करके सब साथ में बैठ सकते हो। आई थिंक एवरी पीसी हैज़ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये डिफरेंट लग रहा है मुझे, बट उसका वेबकैम भी है, बट अच्छी सी है। सो खेलो एंड मज़े करो। ओके गाइस, सो अभी हमने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया, बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। आप मानो या ना मानो, यहाँ पे कनाडा में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कोई लैब आप नहीं शूट कर सकते, किसी को इंटरव्यू में आना नहीं है, किसी को यूट्यूब पे आना नहीं है। यू नीड टू कंसिडर एवरीथिंग। हमने कॉलेज से तो परमिशन ली थी, बट उसमें भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स को नहीं आना था वीडियोस में, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते। किसी ने लैब्स हमें नहीं दिखाई, किसी ने लैब्स दिखाई समवेयर ओपन कि भाई ठीक है चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता चलेगा जो इंडिया से देख रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा बनाने में बहुत सारा एफर्ट्स किया है। तो जो भी आपका सजेशन हो वो कहना। बाकी मेरा एक अगर मैं इस वीडियो का आपको एक एंडिंग पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बोलूँ, तो ये गोल यही था कि आपको ये पता चले कि भाई आज की जो वीडियो है उसमें जो सर्विसेज यहाँ पे एक कॉलेज ऑफ़र करती है, तो उसमें जो मैंने नहीं कवर की वो मैं आपको कह देता हूँ। एक थी कि यहाँ पे हमारा एक स्टार्टअप है जो कि फर्स्ट स्टार्ट है, जहाँ पे अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है आपके पास तो आप उनको कह सकते हैं, आप उनको पिच कर सकते हैं, दे कैन गिव यू फंडिंग। दैट्स अ रियली गुड आइडिया। फिर एक डीसी हायर करके जहाँ पे वो लोग आपको आपका रेज्यूमे बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज हैं, बट बहुत सारी मैं कवर नहीं पकड़ पाया। बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स है, बहुत सारे डिफरेंट लैब्स है, बट हर कुछ मैं 3 घंटे में कवर नहीं कर सकता। वो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो मैंने ट्राई किया कि जो कॉमन प्रोग्राम्स जो लोग CLT ज़्यादा लेते हैं या जो भी बेसिक प्रोग्राम्स है वो सब मैं ज़्यादा कवर करूँ एंड उनसे बात करूँ, उनका एक्सपीरियंस लूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट। बट या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कहना कमेंट में। एंड अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन हो, आपको कोई भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर कमेंट करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो की होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।